Welcome back. In this module, we will study more about E2E test. So on my screen, you can see a demo application. So we have a text box for username and then the password, और फिर हमारे पास login का button है, and when we click on this, it would take us to the home page, which is PIM. So let's consider कि हमने इसमें ये करना है कि we have to find these two text boxes, और इनके अंदर we need to place the username and password, and then we have to click on this login button. और उसके बाद हमने ये make sure करना है कि ये it land on the dashboard page, right? So this one is the dashboard page. So when we log in, actually it is not landing on the dashboard page. So it means ये हमारा test case going to be fail. So let's see how do we program this test case. So सबसे पहले we need to click on this text box and we will inspect it. हम देखेंगे let me click on this and find. Okay, so this is the text box and इसका जो नाम है that is username. It has a placeholder, and then we can see similarly if I click on this and try to find the password field, we can see इसकी जो type है that is password, and then there is a name. So one way ये है कि मैं इस site को open करता हूँ and I use selector playground to find this element. And there is another way we can write the X path. हम X path कैसे लिखते हैं, we will try to learn in this video. Okay, let me copy the URL of this site, और हम एक नया test अब लिखते हैं यहाँ पे. Let us call it as that test2. I don't need this one. Okay, so let's say it's a login test, and function enter cy.visit to open this site in the browser. Okay, so let us visit this site and see कि हम selector playground से इसकी जो elements हैं उनको पहले find out करने की कोशिश करते हैं. So I will simply just save this and ये इसमें so we can see कि इसने पहले जो है Google test run किया है, and now you can see कि ये login test इसने run किया है. अभी run करना है. Let's wait. Okay, so now the login test is running and we are on this site. Okay, here we go. So we are on this site, और the one way we discuss is कि हम इसको find out कर सकते हैं using selector playground. अगर मैं यहाँ पे click करता हूँ and if I click on this, so you can see हमारे पास quite a complex type of selector we find. ठीक है, हम इसको भी यूज़ कर सकते हैं in order to get, but there is an other way कि हम जिसे यूज़ कर सकते हैं in order to access this element. वो क्या है? We can write its X path. अच्छा, beside cy.get we also have contains function. So we can see कि हम इस text box को find कर सकते हैं using contain method. So say अगर मैं इसे copy कर लूँ, so let us see कि क्या हम contain को use करके we can reach to this text box or not. So I'm going to copy this and let's try to then say, और यहाँ पे I would say कि username, because उसके placeholder में ये value पड़ी हुई है. Let us see again. So no, not this one. So this one, user name dot type
से यहाँ पे मैं कहता हूँ admin. So let us see if this works or not. I'm going to save this. Okay जी. We can comment out the Google test just to save the time. And there is another way. You say we'll see that in a while. What if we only want to run few test cases or one of them? वो हम कैसे करेंगे? We'll learn that in a while. So it is running, and let's see कि क्या वो उसको if it is able to find the text box using contain or not. So यहाँ पे we can see there is an failure error which is saying कि अगर हम इसको console पे देखें so it is saying कि actually we cannot, it was not a typeable element. So इसका मतलब है उसको ये element नहीं मिला. So now I'll show you कि हम कैसे हम ये selector लिखें so that we can reach to this element. Okay, so what we can do is कि हम इसमें first of all if we see कि ये input type का box है, so I would say input and then इसके अंदर हमारे पास if I can come back here और यहाँ पे हम देखें let me select this one. Okay, so this is an input और इसके अंदर जो tag name है that is user name और इसके अंदर जो value है that is username. So we can use this one. So I would say name equals username and then ये हमने इसको फाइंड आउट कर लिया एंड देन वी कैन ओके टेक्स्ट बॉक्स में होता है कि समटाइम देयर इज वैल्यू ऑटोमेटिकली लोडेड देयर सो इट्स बेटर टू क्लियर इट सो वी कैन यूज द क्लियर मेथड एंड देन वी विल यूज द टाइप मेथड टाइप टू राइट एनीथिंग इनटू दिस टेक्स्ट बॉक्स ओके नाउ आई एम गोइंग टू सेव दिस एंड लेट्स सी इफ इट्स वर्क्स और नॉट और ये रन हो रहा है. Okay, it's giving me an error, right? So actually I don't need to use the content, instead I have to use the get method so to access this using this. Okay, so now we can see कि अगर मैं इसके ऊपर step by step यहाँ पे लेके आऊँ so it is able to find this web element और इसको clear किया and then typed into it. So yeah, we can see it. It worked fine now. So let me quickly write the next कैसे उसको एक्सेस करेंगे. that is input name equal to this time it's password instead dot clear. To use clear method is kind of an extra care. Type admin 123 and then इसमें जो next step है वो हम ये perform करते हैं कि हम इस login के बटन को find out करते हैं. So if I can let me open this one. Okay, so if I can find out this login button मैं इसको देखता हूँ यहाँ से. Okay, so it's the submit button its type is button and then submit. और अगर मैं इसको if I click here or if I try to find it using the okay, so we can see कि यहाँ पे selector playground को यूज़ करते हुए अगर मैं इसे कॉपी करता हूँ तो let's see if it work. इसे paste and then click. क्योंकि एक बटन है तो इसके ऊपर हम क्लिक का मेथड यूज़ करेंगे इन ऑर्डर टू इंटरेक्ट विद दिस. ओके जी, लेट अस डू दिस एंड सी कि क्या ये लॉगिन करता है या नहीं. और उसके बाद हम जो नेक्स्ट स्टेप है दैट वुड बी अप्लाई एनी काइंड ऑफ असर्शन. तो
यहाँ तक हम अपना काम चेक करते हैं इफ़ वी आर एबल टू डू इट. सो invalid credentials, so maybe I have spelled anything wrong there. Okay, admin123 is the correct password. To save it and let's see. Okay, we are able to log in successfully in this application. So अब मैं now we have to see कि क्या the test case was कि उसे डैशबोर्ड पेज पे लैंड करना चाहिए, बट इट हैज़ एक्चुअली लैंडेड ऑन दिस पेज. सो अब डैशबोर्ड पेज पे अगर मैं आऊँ एंड इफ़ आई सी इट्स URL, तो अब मैं आई विल क्रिएट अ वेरिएबल, कांस्टेंट वेरिएबल, एंड आई वुड से मे बी पाथ, एंड लेट मी चेक द डैशबोर्ड URL which is dashboard/index. So I would say dashboard/index. Okay, now we need to check कि जिस पेज पे हमने लैंड किया इज इट dashboard/index या इसका URL कुछ और है. सो इसके लिए वी नीड टू फाइंड आउट हमारे जो करंट पेज है इसका URL क्या है. ठीक है, सो उसे कैसे फाइंड किया जाता है, लेट अस ट्राई टू कोड दैट. टू फाइंड द करंट URL ऑफ द एप्लीकेशन, उसके लिए वी यूज़ cy.url. So it's a method, and then I would say dot then, and we would say जो भी URL हमें रिसीव होगा, and $URL, then the function and this, or we will close this out. I think I'm missing one bracket here, and ending bracket. Okay, now we are into this function, और यहाँ पे we will check. So I would check if the URL which is like provided, say that URL dot includes path, so path is the variable जो भी हमने create किया है, and अगर वो include करता है तो then I would say cy.log, yes, this is the URL which we want to access, or we can say, I would say else cy.log no. Okay, so ये फंक्शन में आई एम पासिंग द URL, और ये वो URL होगा जिस URL के ऊपर हम लोग एट द मोमेंट होंगे, विच वी गेट फ्रॉम दिस फंक्शन. ये URL का जो मेथड है एक्चुअली रिटर्न अस द करंट URL जिस भी पेज पे होंगे, और हम चेक कर रहे हैं कि क्या उसमें ये पास इंक्लूड है या नहीं. जो भी उसका स्ट्रिंग हमारे पास रिटर्न होगी उसके अंदर ये पाथ, और पाथ में क्या है dashboard/index. सो अगर वो इसके अंदर इंक्लूडेड होगा तो इट वुड से यस, अगर नहीं होगा तो इट वुड से नो. सो लेट अस सेव दिस एंड रन दिस. ओके, वी रन इनटू एरर. लेट्स सी कि क्या एरर है. ओके, नेम इक्वल टू यूजर नेम क्लियर. Let me quickly check. This was running fine before. Name and password.
I don't think so. There is an issue on this line. Okay, it is okay. We can see कि इसने no log किया है because जो URL है, we can see ये जो URL है in this address bar, it do not contain dashboard/index. So this is how we can find the URL and we can like check के इसमें so हमने इसमें चेक किया था कि dashboard/index है या नहीं. So we can see clearly कि यहाँ पे नहीं है क्योंकि dashboard का index. So this is how we can apply different assertions. So I'll see you in the next chapter with more on E2 testing.